Assalamu alaikum, grade 6. Today we will read lesson 2 of unit 2, a website advertisement. The name of lesson is GREEENFORCE. Actually, GREEENFORCE is a website which works for the animals and the species which and the habitats which are endangered, means they are decreasing day by day due to many reasons. There can be human activities, there can be pollution and many others. So there are different teams around the world which work for to preserve endangered wildlife and fragile habitats around the world. So we will see the teams first. These names of those teams are written here: Amazon, Africa, Caribbean, South Pacific and South China Sea. In this lesson particularly we will read about marine habitat and special type of species which exist in water, which is coral reefs. We will read about coral reefs and then we will talk about them. So before, it is very important that you should know what is the meaning of coral reefs. This is the picture of coral reefs present in water. Now this, what is coral reefs? Actually, coral reefs are underground or underwater ecosystem. Coral actually is an animal. It looks like a turtle and because it contains hard covering of calcium carbonate, and when one coral is take births on the seabed, then another coral take births on seabed, and then they exist in piles, and those piles are called coral reefs. And coral reefs are very important. They play a very important role in water. They protect our coasts from waves, storms and floods, and they are also home to various species living in water, and they also absorb carbon dioxide from water, like plants absorb carbon dioxide from air on earth. So they are of great importance, but day by day their number is decreasing. They are in danger. So that's why the teams are working on its preservance, on its conservation, and we will read in this lesson about coral reefs and the ways to conserve them. So let's read. Coral reefs are widely known as rainforests of the sea because they are home to such a massive diversity of species. कोरल reefs को बड़े पैमाने पे कहा जाता है समुंदर के रेन फॉरेस्ट्स, क्योंकि वो घर हैं बहुत ज़्यादा स्पीसीज का. बट नॉट ऑल पीपल अप्रिशिएट द क्रूशल रोल दैट कोरल रिफीज प्ले. लेकिन सभी लोग कोरल रिफीज के अहम किरदार को दाद नहीं देते, उसकी कदर नहीं करते. ऑन वेरियस लेवल्स, मुख्तलिफ लेवल्स पे, इन सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ अलॉन्ग कोरल कोस्ट लाइन्स, इंसानों की ज़िंदगी को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है कोरल रिफीज साहिल किनारे. एंड एज फर्टाइल ग्राउंड फॉर मेडिसिनल डिस्कवरीज येट टू बी मेड. और हमें बहुत सारे तरीके मुहैया करता है मेडिसिन की फील्ड में डिस्कवरीज के लिए. The fact is that without the coral reefs to protect fragile coastlines, many islands and coastal areas would simply disappear beneath the ocean waves. हकीकत तो ये है कि कोरल reefs के बगैर हम इन नाजुक साहिलों की हिफाजत नहीं कर सकते थे. बहुत सारे जजीरे और साहिली इलाके पानी के नीचे या समुद्र की लहरों के नीचे अब तक गायब हो चुके होते. Add to this the role they play as a nursery ground for young fish and as an abundant food source for coastal communities, you begin to realize that coral reefs are more than just a pretty underwater garden for divers to enjoy. मज़ीद अगर इनके किरदार के बारे में बात की जाए तो जो बिल्कुल छोटी मछलियाँ होती हैं उनके लिए घर के तौर पर काम करता है, और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा खुराक भी मुहैया करता है जो कम्युनिटीज़, जो लोग साहिल किनारे रहते हैं. और फिर आपको ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि कोरल reefs सिर्फ एक रंगीन अंडर वाटर गार्डन नहीं है गोताखोरों के लिए. Unfortunately, these benevolent features are not sufficient to save the reefs and their resident fish communities from the threat of destruction through overfishing, blasting, pollution and other human impacts including climate change. बदकिस्मती से ये बहुत ही ज़्यादा
जो फलाही खसूसियात हैं ये भी काफ़ी नहीं हैं रफीज़ को और उनकी रिहायशी मछलियों की कम्युनिटीज़ को इस तबाही के खौफ से बचाने के लिए, जो कि पैदा होता है खौफ ज़्यादा माहीगीरी की वजह से, ब्लास्टिंग की वजह से, आलूदगी की वजह से और दूसरे इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसमें मौसम की तब्दीली भी अहम किरदार अदा करती है। It is estimated that 27% of the world's reefs are now irreparably damaged and a further of 32% are facing severe difficulties. ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 27% पूरी दुनिया में मौजूद कोरल रीफ्स को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है और मज़ीद 32% बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। But all is not lost. On the positive side, reefs respond well to conservation measures aimed at rebuilding, and fish communities can regenerate effectively when sustainable fisheries policies are employed. This is where GREEENFORCE projects can make a real difference. Our data can be used to identify areas requiring protection and monitor recovery rates. Our teams also play a valuable role in educating coastal communities about their reefs and investigating methods of alleviating pressure on fish stocks. लेकिन सब ख़त्म नहीं हुआ है। मस्बत रुख पर कोरल रीफ्स बहाली के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात का अच्छी तरह से रद्द अमल देती हैं और जब पायदार माहीगीरी की पॉलिसियाँ इस्तेमाल की जाती हैं तो मछली की जमातें मौसर तरीके से दोबारा तख्लीक हो सकती हैं। ग्रीन फोर्स के मंसूबे एक हकीकी फ़र्क ला सकते हैं। हमारा डेटा इन इलाकों की शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जहां तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है और बहाली की शरह की निगरानी की जाती है। हमारी टीमें साहिली बरादरी को कोरल रीफ्स के बारे में आगाही देने और मछलियों के स्टॉक के खात्मे के तरीक़ों की तफ्तीश में भी काबिल कदर किरदार अदा करती हैं। GREEENFORCE teams are working on the front line, gathering important information for scientists and managers, communicating directly with local people who depend on coral reefs. GREEENFORCE की टीम्स फ्रंट लाइन पर काम कर रही हैं और इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही हैं साइंसदानों और मैनेजर्स के लिए, और वो बराह रास्त कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करते हैं वहाँ के मकामी लोगों से जो कि कोरल रीफ्स पर इन्हिसार करते हैं। And of course learning a great deal themselves about marine biology and conservation and about living with the sea. और यकीनन वो खुद भी सीखते हैं बहुत ज़्यादा हयातियात मैरीन बियोलॉजी मीन्स आबी हयातियात के बारे में, उसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के बारे में और समुंदर के साथ रहने में। I hope you understood today's lesson. Inshallah, in next class we will do exercises of this lesson. Allah Hafiz.